So good morning students. Yesterday we have almost completed the chapter. So abhi what we will do, I'm going to tell you that how you have to do this chapter. So first of all I'm telling you to कि इतना तो आप कर ही लीजिए जब तक आपको copy work आए. तो सबसे पहले that you have to write the key terms. The key terms will be like जो भी मैं आपको की टर्म्स बता देती हूँ, जैसे देयर इज़ वन की टर्म एपिडेमिक, environment, decompose, dispose, and yes, so these are the few keywords and I'm finding more panelized, so these words should be your keywords. And then in this and then you have to write key terms also, like there are 3 key terms in your book on the page number 112, that is biodegradable waste, non-biodegradable waste, and recycle. Okay, so what is biodegradable waste? Which can be decomposed easily. And then we have non-biodegradable waste which cannot be decomposed easy, which cannot be decomposed. So कुछ biodegradable are जो easily decompose हो जाए, और non biodegradable is जो decompose हो ही नहीं. And then we have recycle, जो भी material है उसको हम उसके ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर सकें, तो दैट इज़ रिसाइकल एंड कुछ नया बना सकें. ओके, सो दिस इज़ द key terms you have to write in your copy. And then we have now I know. So after we have completed this chapter, so what do you know? So we should keep our surroundings clean. So this is the first thing which you have learned, that you have to keep your surroundings clean. We should separate biodegradable waste and non biodegradable waste. तो हमें अपना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग रखना चाहिए. जैसे हमारा जो चलता भी है सूखा कचरा, गीला कचरा, क्योंकि गीला कचरे से हम मैन्योर बना सकते हैं एंड सूखा कचरा कैन नॉट बी डिस्पोज, सो वी कैन हम उसको उसमें पिट में डाल देते हैं, सोक पिट में डाल देते हैं. ठीक है. देन सॉलिड वेस्ट कैन बी डिकम्पोज बाय डंपिंग in landfills or in compost pits or by incineration. Okay, so जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉलिड वेस्ट हो गया, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया एंड ऑल द कैंस हो गया, तो दीज आर सॉलिड वेस्ट जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं. बेसिकली दे कम इन ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये इजीली डिकम्पोज नहीं होते, तो इनको लैंडफिल्स में डाल देते हैं. जैसे मैंने सोक पिट बताएगी, खड्डा खोद के उसको उसमें डाल दिया. And then waste water can be decomposed by using soak pits. और जो waste water होता है उसको soak pits में डाल के we can decompose. तो recycle, reduce and reuse are the 3 ways by which we can save our environment from pollution. So see, I have told you 3 hours yesterday. So there are these 3 hours. These 3 hours are the only help through which we can save our environment. Okay, so we should apply these 3 hours in our daily life. That is, first is recycle, reuse and reduce. Now come to the fill in the blanks. So first fill in the blanks is dirty surroundings invite diseases and dash. ठीक है. Environment sanitation means keeping our dash clean. So environmental sanitation means keeping our keeping our areas clean. Dash diseases can occur in dash areas. So epidemic diseases, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया है और प्लेग था ये, so these are harmful disease can occur in dirty areas. Okay, the water from our house goes down through the drain. जो भी हमारा वाटर रहता है घर का, वो कहाँ जाता है? ड्रेन में जाता है. And then there is a second B, latest practice में ही there is a second one, classify the following item as a biodegradable and non-biodegradable materials. So there are few things which is written, तो आपको ये मुझे बताना है. This is your HLA basically, because I have completed the chapter and this is very nice question that out of this ये जो 6 है, ये जो 6 चीज़ें हैं, आप मुझे बताइए ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है. बायोडिग्रेडेबल मतलब which can be easily decomposed, and non biodegradable is which cannot be decomposed.
ठीक है. So paper, detergent, rubber, leftover food, plastic and wood. So this is your homework. Then you have take the correct statements and cross the wrong ones. So paper is non-biodegradable, so this is false. It is degradable. And then cleanliness should be cleanliness should be not cleanliness should not be just confined at our home. This is also wrong. मतलब it should be हमें अपने ही घर का नहीं, हमें पूरे अपने जो सोसाइटी है या फिर इन जो भी कंट्री है उसको भी हमें ध्यान में रख के क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए. Recycling is a useless process, so this is also wrong. Recycling is a very nice process. We can actually create new things by recycling it. A soak pit can be used to dispose water, so this is true. Soak pit can be used to dispose water. We cannot reuse any waste material at home, so this is also wrong. We can use so many waste material at our home. जैसे एक example था that buckets, जैसे किसी के घर में पेंट होता है and तो बहुत सारी buckets बच जाती हैं, तो you can use those bucket as a dustbin, है ना. So now we have short answer type. So what is biodegradable waste? Okay, so biodegradable waste are those waste which can be decomposed easily. Okay, what is non-biodegradable waste? Non-biodegradable waste is waste that which cannot be decomposed. Give some examples of non-biodegradable waste. And so non-biodegradable waste में आएगा, so there are plastic, okay, cans, and there's so many things. Detergents, aluminium, plastics, polythene bags, silver foil. So silver foil. Okay, fine. So what is an opening dumping method? So see, ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन 1 इज़ ऑन द पेज नंबर 122. जो की टर्म्स हैं बायोडिग्रेडेबल वो आपको लिखना है, एंड व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो भी आपको 122 पेज नंबर पे है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. गिवन सब एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया, प्लास्टिक, कैन, सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम, रबर. सो these things cannot be decomposed. What is open dumping method? So ये आपको पेज नंबर 119 पे मिलेगा, and you have to write whole paragraph of the 119 page number, that is second paragraph, the open dumping method. Okay, so I have completed ये आपको कौन से पेज नंबर पे था, 119. तो I have completed the short answer type, and long answer type I will take in the online class, और मैं आपको या तो मैं आपको रिटर्न में भेज दूँगी, एंड देन शॉर्ट तो कंप्लीट हो गया, एंड वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑल्सो, एंड आई हैव गिवन यू द HLA. So there is one more HLA that and there's one more thing that you have to also make the diagram of 3 hours. ठीक है, और आपको उन 3 hours का डायग्राम बनाना है और उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है. So yeah.